Hello bachon, let us read this question. It is a passage type question. For a spontaneous reaction, the free energy change must be negative. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta H is the enthalpy change during the reaction. T is the absolute temperature and delta S is the change in the entropy during the reaction. Consider a reaction such as the formation of an oxide M plus O2 gives MO. Dioxygen is used up in the course of the reaction. Gases have more random structure, less ordered than liquid or solid. Consequently, gases have a higher entropy than liquids and solids. In this reaction, S entropy or randomness decreases. Hence, delta S is negative. Thus, if the temperature is raised, then T delta S becomes more negative since T delta S is subtracted in the equation, then delta G becomes less negative. Thus, the free energy change increases with the increase in the temperature. The free energy changes that occurs when 1 mole of common reactant, in this case oxygen, is used may be plotted graphically against temperature for a number of reactions of metals to their oxides. The following plot is called an Ellingham diagram for metal oxide. Understanding the Ellingham diagram is extremely important for the efficient extraction of metals. So Ellingham diagram क्या होता है? It is a graph drawn between delta G naught and the temperature. ओके सो ये ग्राफ को देखे हमें एक क्वेश्चन बताना है फॉर द कन्वर्शन ऑफ CA solid to CaO solid which of the following represents the delta G versus delta T. ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. ओके लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. कैल्शियम, ये जो एलिंघम डायग्राम में कैल्शियम कहाँ है? यहाँ पे. सो कैल्शियम का कर्व ऐसा दिख रहा है एंड दिस इज इन बिटवीन -1200 के बीच में है ना, -1200 -1000. So this is more than -1200. Delta G value greater than -1200 kilojoules, वो हमें पता करना है. And so greater than 1200 कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पे तो -1100 -1100 है. सो यहाँ पे -1300 -13. सो हमारा ऑप्शन इधर सी में और डी में रहना चाहिए. नेक्स्ट, सो कैल्शियम का ये देखो करस्पॉन्डिंग, दिस इज कैल्शियम कर्व, राइट? आई एम चेंजिंग इट इनटू ब्लू कलर. ऑब्जर्व दिस कर्व इज फॉर कैल्शियम, राइट? एंड कैल्शियम करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है देखो. सो टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेल्सियस. सो ग्रेटर देन 1500 मतलब in the first option temperature is not mentioned. First option में कर्व गलत दिया है ना, तो कर्व इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन में कर्व रही सही दिया है मगर डेल्टा जी वैल्यू रॉन्ग दिया ना, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग. एंड डी ऑप्शन में कर्व स्ट्रेट दिया है, तो डी ऑप्शन कर्व स्ट्रॉन्ग. सो बी, ए बी डी ऑप्शन आर रॉन्ग. सो सी में कर्व सही दिया है ऐसा, और डेल्टा जी रिप्रेजेंट करा है -1300 किलोजॉल और उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर दिया है ग्रेटर देन 1500 मीन्स 1800 डिग्री सेल्सियस. सो सब मैच कर रहे हैं ऑप्शन सी में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर कैल्शियम कन्वर्शन टू calcium oxide conversion. Delta G is more negative. Delta G more negative means more spontaneous of the reaction, means feasibility of the reaction. So Ellingham diagram explains the feasibility of the reaction, whether the reaction takes place or not.
that we can. So this reaction is possible and option C is the correct graph. Hope you understood. Good luck.